Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to this bonus lecture for AI Batch 1 at Seraverse Academia. Today we'll be doing something very interesting. So first of all, this lecture is a bonus lecture. This is in the last 10 days of Ramadan, so we are not going to have our regular weekly lecture on the weekends this weekend. So for this reason, I've decided to record a bonus lecture, and this lecture will be made public. So inshallah, this will be posted on YouTube, unlike all of the other lectures which are only exclusive to our paying students. So the idea behind this was to basically a glimpse into what we are doing here at Seraverse Academia in terms of our AI course, what our objectives are, and hopefully also to teach something useful to those who actually watch this lecture, inshallah, right? So my name is Shadnan Kaisar, for those who don't know. I am an AI engineer. I have been working in the AI field for the last 7 or 8 years. Out of that, I spent a couple of years in the United States, 3 years to be precise, when I was working with oil and gas companies, helping them sort out their data needs. And since then, as you all know, AI has been really taking the world by storm, and the technology is changing every day. It has come to the point where हर 3 महीने पे टेक्नोलॉजी इतनी बदल जाती है, it changes so much that you have to kind of completely rethink how how things are working. And there's a lot of noise, lot of information that is reaching people, where अगर आपके पास एक complete understanding नहीं है पूरे field की, it can be quite misleading in many ways. It can be hard to understand कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, what is this AI, where it is taking us, and so on, right? Jobs चली जाएंगी क्या, किस तरह की jobs available रहेंगी, what are we going to do? So before we jump into all of that, let me just quickly outline आज हम इस क्लास में क्या सीखेंगे, right? So as the title probably suggests, you are going to learn how to develop an AI application end to end from scratch and without writing a single line of code. तो ये promise मैं इस क्लास में fulfill करूँगा. How? By showing you how it's done. So right now, as you can see on my screen, we are at lovable.dev. This is a free website, but there is paid versions also. So there's a limit to how many times you can basically use it on the free plan. I believe you have only 5 messages per day on the free plan. So let's really quickly understand what this Lovable is all about, right? Idea to app in seconds says that Lovable is your superhuman full stack engineer. What they mean by that is that this right here, what you're seeing in front of you, this chat box, this is connected to Lovable, which is a full stack engineer, which means you don't have to write the code. Lovable will write the code for you. You only have to describe to Lovable what you want to build. आपने लवबल से सिर्फ बताना है, अंग्रेजी में बताना है कि आपको बिल्ड क्या करना है, आप क्या बनाना चाहते हैं, और लवेबल आपके लिए वो बना देगा, बिकॉज वो एक फुल स्टैक इंजीनियर है. नाउ ऑब्वियसली दिस साउंड्स लाइक अ बिट ऑफ अ ड्रीम. ये थोड़ा सा ड्रीम लाइक कहानी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बस एक कंप्यूटर को अंग्रेजी में बताएंगे और वो एंड टू एंड बना देगा. खासकर दोज पीपल हु हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड वुड अंडरस्टैंड दैट दैट इज नॉट समथिंग सिंपल, राइट? एंड द थिंग इज 3 महीने पहले तक, 4 महीने पहले तक, there was not a lot of technology. For example, एक टेक्नोलॉजी आई थी डेविन, शायद आपने सुना होगा, एंड दैट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, राइट? तो जहाँ तक पता चला, डेविन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, एंड डेविन को बेसिकली एडवर्टाइज किया जा रहा था एज एन अगेन इसी तरह से एक फुल स्टैक इंजीनियर हु कैन बिल्ड एनीथिंग यू वांट, बट एंडेड अप दैट इट वाज नॉट बीइंग एबल टू डू इट दैट वेल. बट लवेबल ने थोड़ा सा अप्रोच अलग रखा है, मैं उसकी डेप्थ में आज नहीं जाऊँगा, बट लवेबल ने they have come very close. I mean, I think Lovable से better मैंने आज तक कोई भी solution नहीं देखा है, AI solution,
विच राइट्स कोड एंड टू एंड, राइट, विदाउट आपको कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत है, राइट। आपको कुछ कोड नहीं लिखना है, ज़ीरो कोडिंग ट्रूली, एंड इट इज़ एबल टू मेक रिलायबल नाइस लुकिंग एप्लीकेशंस एंड टू एंड, जस्ट बाय आप उसको अंग्रेजी में समझा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस वेबसाइट रियली क्विकली। अब जैसा देख सकते हैं यहाँ नीचे देर आर माई प्रोजेक्ट्स, ये मेरे कुछ अपने प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। आई एम इवन बिल्डिंग माई ओन, सो एज यू कैन सी हियर रॉकेट सिंह, आई एम बिल्डिंग माई ओन वेबसाइट ऑल्सो, which is the website to my own AI company, rocketsing.ai. We'll go into that later. Here, if you come to latest and featured and so on, you will see कि कुछ public applications हैं जो लोगों ने Lovable यूज़ करके बनाए हैं, और वो सब अवेलेबल हैं आपके लिए इफ़ यू वांट टू जस्ट पिक इट अप एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर, है ना। एंड अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली लवेबल को बताना चाहते हैं कि आपको क्या बनाना है, आपके दिमाग में कोई नया आइडिया है, तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन देयर इज टेम्पलेट्स वेयर आपके पास कुछ बनी बनाई एक तरह से वेबसाइट से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर वहाँ से आप बिल्ड आउट कर सकते हैं। बट आज मैं थोड़ा सा आई वांटेड टू, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि AI एप्लीकेशन बनाएंगे, तो टुडे वी विल जस्ट बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। हम लोग ये टेम्पलेट्स बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स थिंक अबाउट आज हम क्या बनाना चाहते हैं। एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज दिस इज अ ट्यूटोरियल आफ्टर ऑल, to really learn how to do, how to really use the power of Lovable and to build applications that's not just cool, something that you can put on your resume. नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं, to actually be able to build on Lovable something that you can actually sell, right? That is the ultimate goal with our course here at Seraverse Academia. And so the idea is the AI course at Seraverse Academia is completely entrepreneurial, right? हमारा objective है ही यही कि in a period of 2 years, 100% of our students who stay with us for that period, they should be a co-founder or a leading person at a startup where they themselves have built an application from scratch, from idea to app, like it says, in seconds, right? Where we deploy it and we try to even monetize it, right? So मैं entrepreneurs बनाना चाहता हूँ इस पूरे course के through, but today in this course we'll get a sneak peek into how that looks, inshallah, right? So today let's start with this idea, and let's start by telling लवेबल हम क्या बनाना चाहते हैं। तो आज मैं कपल ऑफ टूल्स यूज़ करूँगा, एक ये लवेबल है, अदर देन दैट वी विल यूज़ कैनवा। सो व्हाट विल डू इन कैनवा इज़, यहाँ पे मैंने खोल लिया है, दिस इज कैनवा, इज जस्ट यू कैन से यहाँ पे कुछ भी तरह की एडिटिंग, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी वीडियोस, कुछ भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। तो कैनवा में यूज़ करूँगा थोड़ा बहुत स्क्रिबलिंग के लिए, थोड़ी मतलब मेरी वेबसाइट कैसी बननी चाहिए, अगर मेरे को लवेबल को काइंड ऑफ इमेज के थ्रू बताना है कि लाइक हाउ दिस शुड लुक when in the words are not enough, sometimes an image can be worth 1,000 words, तो वहाँ पे हम images का यूज़ करेंगे, but we'll come back to this. Let's just start with a simple prompt to begin with. तो आज हम लोग बनाएंगे एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन, kind of a mind map application, right? So I want to create a mind map application, which is a fancy way of saying note taking application. Okay. I want the following main features. थोड़ा सोचते हैं व्हाट डू वी मीन बाय एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन, राइट? सो आपने प्रॉब्ली यूज़ किए होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा विद अ ट्विस्ट में बनाना चाहता हूँ। आई वांट टू हैव एन AI फीचर इन दिस नोट टेकिंग एप्लीकेशन, एंड द AI फीचर इज रिलेटिवली सिंपल दैट वी आर टेकिंग टुडे, विच इज़ कि अगर हमने कुछ नोट सेव किए हैं तो हम अपने ऐप में आकर एक क्वेश्चन पूछ सकें और हमारा ऐप हमारे नोट्स के बेसिस पे आंसर दे सके, राइट? So users should so let's start with the different pages, क्या क्या देख सकते हैं, राइट? तो let's say एक लैंडिंग पेज है, ठीक है, where here we okay,
So let's describe the landing page. A nice and sleek um, looking landing page where the user can quickly sign, one second, quickly sign. मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन भी कर देता हूँ ताकि आपको मेरी स्क्रीन थोड़ी और अच्छे से दिखे, so that the user can quickly sign up and log in. Okay, just simple, right? um, let's also give a name to the app. uh, our app will be called, what's a nice name for a note-taking AI application? um, let's say, oh, there's a nice word, Rewind. This is actually that I believe there is an actual company by that name, so we're just doing this for educational purposes. So we'll call it Rewind, and the idea is कि आप life rewind कर सकें, right? अगर आपने कोई note ले रखा है from history, आप आके question पूछ सकते हैं about that note and sort of rewind yourself back into history, right? Okay. Okay. And the main idea is that I can take notes and then I can ask my app to rewind time and give me answers. I can ignore it. One second. Let me say that in a different way. The main idea is that I can take notes and I can ask questions from my notes. Now, इसमें एक आध चीज़ें मैं इसको साथ साथ बता रहा हूँ. Basic C, we will use basic RAG to achieve the question answering feature. अब आप सोच रहे होंगे कि ये रैग क्या है, ठीक है? तो मैं रियली क्विकली आपको लेके चलता हूँ चैट जीपीटी पे एंड लेट्स आस्क इट, राइट? मैं एक नया विंडो स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे. ओके, सो क्विकली टेल मी in very simple terms what is RAG. Okay, retrieval augmented generation is a method wherein AI fetches relevant information from some database or documents before generating a response. Simple सा point, right? अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे कि आपकी मम्मी का बर्थडे कब आता है, तो चैट जीपीटी आपको बताएगा कि मुझे नहीं पता, because ChatGPT को नहीं पता, जो honest बात है, right? So in this type of situations where you want an AI, है ना, to be able to answer questions about things जिसका normally उसको answer नहीं पता होता, मसलन answers from the specific notes जो आपके पास हैं, तो in that case आप RAG नाम की एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं. It's a very simple concept. The idea is before AI आपके क्वेश्चन का आंसर देगा, वो जाके आपके पुराने नोट्स को एक बारी देखेगा और उन नोट्स के बेसिस पे आंसर देगा. इन वेरी सिंपल टर्म्स हम ये कर सकते हैं कि जब यूज़र कोई क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन के साथ साथ हम वो सारे नोट्स भी भेज दें एक LLM को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, मसलन चैट जीपीटी को, राइट? और फिर वो नोट्स देखकर और उस हिसाब से उस क्वेश्चन को देखकर उसका आंसर दे सकता है. दैट्स द वेरी सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रैग, राइट? तो एक लैंडिंग पेज होगा, ठीक है? देन ऐड notes page, right? Here let's make a nice and minimalistic UI. Take inspiration from how the manage knowledge feature is implemented in Lovable itself.
सो मैनेज नॉलेज नाम का एक फीचर है जो लवेबल के अंदर ही है। अभी मैं आपको इन अ सेकंड दिखाऊंगा व्हाट दिस इज। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल फीचर, काइंड ऑफ अ नोट टेकिंग फीचर इन इटसेल्फ। ठीक है। सो द ओनली थिंग इज मैं उसको बता रहा हूँ कि ओके, ये जो है ना मैनेज नॉलेज वाली यूआई का बेनिफिट उठाओ इन टर्म्स ऑफ हाउ इट शुड लुक, राइट? सेल्फ टू ओके फॉर डिज़ाइन एस्थेटिक्स। सो मतलब अब मैं उसको बोल रहा हूँ अगर कि मेरे को एक नोट टेकिंग पेज, ऐड नोट्स का एक पेज चाहिए, राइट? एज इन एक ऐसा पेज कि जहाँ पे मैं नोट्स लाइक राइट ऑन ऑब्वियसली ऑन दिस पेज, इफ इट्स नॉट ऑलरेडी ऑब्वियस है ना, ऑन दिस पेज द यूजर will should be able to write yeah okay will add notes by typing into a nice uh, text editor. um, okay, I think that's good enough. ठीक है। um, maybe maybe let's just call it notes page, right? So on this page the notes should all be visible in cards. अभी मैं बताता हूँ what I mean by that. And there should be a button to add note, which opens a pop up to pop up text editor, right? Does that make sense? एक बार मैं पढ़ लेता हूँ. Here, let's make a nice minimalistic UI. Take inspiration from how manage knowledge features implemented in Lovable itself for design aesthetics. ठीक है. This feature, the user will add notes by typing into a nice text editor. On this page, the note should also. So actually, I'll write it in a slightly different way. ठीक है. कभी कभी ये जो है ना प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखते हैं, एक्चुअली दिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो मैं साथ साथ सोच रहा हूँ और लिख रहा हूँ, इसलिए मे बी आई एम नॉट राइटिंग इट द बेस्ट वे पॉसिबल इन द फर्स्ट कोड. सो आई एम गोना राइट रिमूव दिस, आई एम गोना राइट इट इन अ डिफरेंट वे अगेन. सो this page fulfills two main purposes: view notes and edit notes. Let's see. Yeah, I will just let Lovable figure out what page kaisa dikhna chahiye and all that, right? And then there is the ask questions, right? Ask my notes page, right? So on this page, we want a nice and minimalist, same, right? I just ये मेरा अपना personal opinion है. अगर आपको nice and minimalist नहीं चाहिए, आपको like savvy and colorful चाहिए, तो go for it, right? So on this page, I want a nice and minimalist chat, essentially. Um, how do we say chat UI? Much like chat GPT or even some, okay, much like chat GPT or yeah. ठीक है. When the user asks a question, types a question, let's be more specific, types a question into the box, into the chat box, I guess, and hits enter. Okay. The question should be sent to, let's say,
GPT, okay, actually Gemini 1.5 फ्लैश, ये एक स्पेसिफिक मॉडल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ व्हाट आई मीन बाय दिस, राइट। सो जेमिनाई 1.5 फ्लैश क्या है, तो अगर आप देखें जेमिनाई गूगल का बेसिकली एक मॉडल है। ओके, लेट मी सी, या ये वाला खोल लेते हैं। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 फ्लैश आर मोस्ट बैलेंस्ड मल्टी मॉडल मॉडल विद ग्रेट परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें इनपुट में आप ऑडियो, टेक्स्ट, इमेजेस सब कुछ दे सकते हैं इसको। ये कोड बना सकता है, टेक्स्ट लिख सकता है, एडिट टेक्स्ट कर सकता है, बहुत तरह की चीज़ें कर सकता है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं ऑन दिस पेज। मसलन यहाँ पे इस मॉडल का डिटेल्स है, जैसे कि कितना इनपुट टोकन्स दे सकते हैं, कितना आउटपुट टोकन आप रफली कह सकते हैं ट्रांसलेट्स इनटू, मतलब आप यूँ कह सकते हैं 9 tokens is 6 words, 3 tokens is 2 words अप्रॉक्सीमेटली। तो 1 million tokens मतलब स्टिल 800,000 वर्ड्स, 700,000 वर्ड्स का इनपुट आप दे सकते हैं इसको, और अप टू 8,000 आप कह सकते हैं 8,000 टोकन, सो दैट्स लाइक 5,000 वर्ड्स तक के साइज का ये रिस्पॉन्स दे सकता है, वगैरह वगैरह। ओके, सो हम बेसिकली इस मॉडल को यूज़ करेंगे, ये फ्रीली अवेलेबल है, नॉट इंटायरली जितना चाहे यूज़ करें, बट एट अ बेसिक लेवल फ्रीली अवेलेबल है। तो मैं अभी इसको अभी से बता रहा हूँ, द क्वेश्चन विल बी सेंट टू Gemini 1.5 Flash. I'll also tell it कि make sure to ask me for the API key, okay, for the model. Okay, and I'll just put that part in the bracket. And then the idea is the question should be sent to Gemini Flash, and of course, Gemini's response should be shown to the user. That's all. I think that's good enough. ठीक है, फिलहाल हमें बस इतने ही फीचर्स चाहिए। उसके बाद हम इसको फर्दर एडिट कर लेंगे, राइट। लेट्स गो, इंशाल्लाह, लेट्स सी हाउ वेल दिस वर्क्स। बाय द वे, यहाँ पे आपके पास अटैच करने के भी ऑप्शंस हैं। तो मसलन अगर आप चाहते हैं, आपके पास कुछ मतलब अच्छे, जैसे मसलन इसी इसी चीज़ के लिए था कि इनफैक्ट इमेजेस भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं आप आके, जस्ट लाइक आप चैट जीपीटी में कर पाते हैं। तो इसी चीज़ के लिए मैं कभी कभी कैनवा यूज़ करता हूँ कि मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ एक चीज़, मतलब कैसा मेरा वेब पेज दिखना चाहिए, और फिर उसको मैं अक्सर लवेबल को दे देता हूँ। बट इन दिस केस आई वांट टू गो कम्प्लीटली लाइक with a blank and state of mind, and I want Lovable to figure out most of the things today. ठीक है, तो देखते हैं कैसा आता है रिजल्ट। मैं इसको भेज दिया है, अब देखिए saying spinning up preview, यहाँ पे okay, this is the input I have given. You will see in a second that it will start writing some code also. Okay, थोड़ा सोच रहा था, rewind, mind mapping and note taking application, blah blah blah. सी, अब इसने डिसाइड किया है कि मैं ये सारी फाइल्स लिखूंगा, उसके बाद इसने फाइल्स लिखना स्टार्ट कर दिया है। सो लिटरली आप देख रहे हैं अपने सामने आंखों के कि जस्ट लाइक एक एंड टू एंड इंजीनियर, जिसको आप अंग्रेजी में समझाएंगे यार मुझे कुछ इस तरह की एप्लीकेशन चाहिए एंड दिस इज़ व्हाट दिस एप्लीकेशन शुड बी एबल टू डू, कुछ इसी तरह से मैंने इसको भी समझाया है। और इसके बाद इसने कुछ मुझे नोट्स भी दिया है कि आई एम एनविजनिंग अ स्लीक मिनिमलिस्ट एप्लीकेशन दैट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम एप्पल्स डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। मैंने तो एप्पल नहीं बोला था, बट ठीक है। Focusing on simplicity, intuitive interaction, and beautiful aesthetics. Very nice. Rewind will be an elegant note-taking platform with powerful AI assisted retrieval capabilities. बहुत बढ़िया। I'll create a design inspired by modern themes. Fine. Interfaces यहाँ पे Notion और Apple का यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। Notion मेरा one of the favorite apps है। Minimalist, cluster free वगैरह वगैरह, ये सब तो ये डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसने खुद से पहले डिसाइड किए, और उसके बेसिस पे भी ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। अगर हम जाएं नीचे तो आई एम श्योर इट्स स्टिल राइटिंग कोड, देखिए। तो ये अपना धनाधन कोड लिख रहा है, हम आराम से वेट करते हैं एक सेकेंड, इसको अपना कोड लिखने देते हैं। हमारा फुल स्टैक इंजीनियर मेहनत कर रहा है। सो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा,
a lot of our students को भी ये चैलेंज आया है रिसेंटली, बिकॉज हमने लवेबल सीखना बस अभी स्टार्ट किया है लास्ट वीक. डोंट एक्सपेक्ट नेसेसरली कि आप डे वन पे लवेबल पे एक ऐसी एप्लीकेशन बना देंगे जो कल आप $1 million बेच दें. राइट. इट्स नॉट दैट सिंपल. कुछ हद तक इवन मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, राइट. सो इन दिस लेक्चर आई दिस इज रियली मेंट टू जस्ट टिकल योर क्यूरियोसिटी, टू शो यू मेनली कि इट इज़ पॉसिबल टू डू दिस, है ना. और मैं कहूँगा कि इफ़ यू डू गो एंड ट्राई दिस आउट योर सेल्फ, इवन इफ यू डोंट ज्वाइन द कोर्स, गो स्लो, गिव योर सेल्फ टाइम. एक और चीज़, कभी कभी ऐसा होगा कि आप लवेबल को कुछ बनाने बोलेंगे और आपके दिमाग में एक पिक्चर है कि दिस इज़ हाउ इट शुड ऑब्वियसली लुक. बट द थिंग इज़ ना, आप रियलाइज में भी नहीं कर रहे हैं कि आपका जो जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो कितने इन अ सेंस, हाउ डू वी से इट, हाउ एम्बिग्यूअस दे आर, है ना. तो लवेबल को बहुत सारे डिसीजंस अपने एंड पे लेने पड़ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट. थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड इसने लिखते हैं यहाँ पे हमारे सामने बैठे बैठे. तो ऑल ऑफ दीज डिसीजंस लवेबल अपनी तरफ से ले रहा है, और कभी कभी लवेबल रॉन्ग चला जाता है, और कभी कभी लवेबल इनफैक्ट कुछ लूप्स में फंस जाता है, वेर आप उसको समझा रहे हैं चेंज करने के लिए और वो कर नहीं पा रहा. एंड दिस फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग दैट स्टार्ट्स कमिंग थ्रू. मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर बोलूँगा कि इस बात का ख्याल रखें कि सी, ये एप्लीकेशंस अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे कि हम बस बोलते हैं और ये हमारी इमेजिनेशन समझ जाए, राइट. वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एग्जैक्टली हाउ वी एक्सप्लेन क्या रिक्वायरमेंट है. और यही वो मेन स्किल है जो हम अभी सीखेंगे, राइट. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट ये नो कोड प्लेटफॉर्म्स अलाउ करते हैं ना अब हमें, इसकी अब it's not necessarily about sitting there and writing thousands of lines of code manually anymore. Um, it's more about figuring out, okay, मेरा application दिखना कैसे चाहिए, and thinking about it from a project manager point of view. I think yeah, अभी बस होने ही वाली load up. So thinking it from a product manager point of view, thinking about the details and thinking about the most important features of your application, क्यों बनाना चाहते हैं, वहाँ आपको अपना दिमाग अब ज़्यादा लगाना है. And you have to also be really specific and really good at communicating your ideas very accurately and precisely to these LLM models, right. आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ओ अब तो AI कोड लिख रहा है तो जॉब्स चल गई, नहीं. यहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, आई मीन इफ आई एम नॉट सिटिंग हियर फॉर इंस्टेंस, राइट, एंड राइटिंग ऑल ऑफ दिस कोड, would it be possible that AI खुद से तो नहीं उठ के ये सब बनाने लगेगा, राइट. सो ऑल दी सो that is still on in the hands of the human, right. We'll always need people, right, to actually make the application. The difference is the actual physical act of writing the code. Maybe AI ज़्यादा पिकअप करने लगे. अब यहाँ पे थोड़ा सा build unsuccessful का एक error आया है. No need to worry. मैं बस इसको बोल दूंगा try to fix this, right, and I'm hopeful that it will be able to फिक्स इट. तो मैंने इसको बस बोल दिया है कि ओके क्या इशू है वो खुद से फिगर आउट करो और उसको फिक्स कर लो. तो इट्स गोइंग टू ट्राई एंड फिक्स इट. लेट्स होप दैट इट्स एबल टू फिक्स इट इन वन गो एंड गिव्स अस the application to start using, inshallah. Let's see. Okay, seems like maybe might have oops, it looks like our AI had a bit of a hiccup and broke the app. Okay, landing notes page मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ. Okay, I'll try to fix it one more time. Okay, it missed to add some class, it seems. Detailment मुझे खुद भी नहीं पता. Don't worry about it. The point is today the idea is we don't want to go into the code and think about the code really. We just want to try and see if we can get this application running without any effort. Okay. Hmm. I'm opening the preview of the application. Let's see if it actually
pulls up. Nice. Okay, we have it. Alhamdulillah. We have our application. ठीक है. Um, your mind rewound. Introducing rewind. ब्रेन का एक और ये भी डाल दिया इसने. पूरे आइडियाज अच्छे से लिए इसने. प्रोजेक्ट इनसाइट्स यहाँ पे थोड़ा सा इसने दिखा भी दिया है कि हाउ योर नोट्स माइट लुक. सिंप्लीफाई योर नोट टेकिंग वर्क फ्लो, बहुत बढ़िया. एफर्टलेस नोट्स, स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन. आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसने एक नाइस सा फीचर भी डाल रखा है. जब मैं होवर करता हूँ तो ये थोड़ा सा मूव अप कर जाता है, राइट. सो ऑल ऑफ दिस इसने खुद से किया है. मैंने कुछ नहीं समझाया था इसको ये सब चीज़ें. लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई क्लिक ऑन नोट्स. ओके, यहाँ पे इसने 2 नोट्स पहले से डाल रखे हैं. नोट्स देखने में भी काफ़ी कूल लग रहे हैं. तो मान लीजिए मैं ये वेलकम टू रिवाइंड नोट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक बना बनाया नोट है पूरा. और यहाँ पे हम इसको चेंज एडिट सब कुछ कर सकते हैं. इवन टैग्स बनाने की एबिलिटी दे रखी है इसने. ठीक है, सेव कर दिया. वापस नोट्स पे जाते हैं, देखते हैं हम एक नया नोट ऐड कर पाते हैं कि नहीं. राइट, अब ये मैं नया नोट पे क्लिक अगर यहाँ करता हूँ तो इट शुड बी एबल टू ओपन अ पॉपअप विंडो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था. लेट्स होप. ओके, पॉपअप नहीं आया बट यहाँ पे एक नोट एडिटर तो आ गया है. तो लेट्स मेक अ नोट. टुडे आई हैव लर्नड हाउ टू मेक वेब applications without writing a single line of code using Lovable. Life seems unreal. मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे. ज़्यादा हो गया जूम. ओके, let's go with this. Okay, and now let me try to save it. Okay, hopefully it is saved. If I go back to notes from here, very nice. Okay, so we have, okay, हमने ये नोट अनटाइटल छोड़ दिया था. इसको टाइटल दे देते हैं. My first note in my first app. I think ये automatically save भी हो रहा है. My first note in my first app. Very nice. Now for the real kicker, right? How good is ask going to work? Can we actually ask some questions? एक काम करते हैं, एक नोट और ऐड कर देते हैं और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स डाल देते हैं. सो लेट्स थिंक ऑफ समथिंग दैट माइट बी इंटरेस्टिंग टू एवरीवन. हियर एक काम करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ ले लेते हैं, राइट. सो लेट्स टेक एक ओके, फाइंड मी अ कॉम्प्लेक्स. फाइंड, लेट मी सी. मैं सोच रहा था कि कुछ नोट्स में क्या कुछ इंटरेस्टिंग डाल सकते हैं क्या, जिस पे फिर हम क्वेश्चंस पूछ सकें. मे बी एक न्यूज़ आर्टिकल. लेट्स गो टू विकीपीडिया एंड गेट सम न्यूज़ आर्टिकल फॉर आवरसेल्व्स फॉर नाउ, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी. ओके, कुछ इंटरेस्टिंग सर्च करते हैं. मे बी AI एजेंट्स. इंटेलिजेंट एजेंट. ओके, आई जस्ट कॉपी दिस फॉर नाउ. अभी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ओके, तो जाते हैं हम एक और नोट बनाते हैं. यहाँ पे कर देते हैं समथिंग लाइक AI विल राइट दिस. एक टैग भी डाल देते हैं यहाँ पे AI का. ओके, कुछ डिटेल्स यहाँ पे हमने डाल दी हैं. एजेंट्स वो हो गया, एक और टैग हो गया. सेव कर दिया, बैक टू नोट्स आ गए. AI नाम का एक और नोट बन गया. अब आस्क पे आते हैं. ओके, आस्क लुक्स एट लीस्ट ठीक ठाक. नाउ फॉर द किकर. लेट्स सी व्हाट हैपेंस अगर हम इसको एक क्वेश्चन पूछते हैं. तो यहाँ इंटेलिजेंट एजेंट है, एजेंट फंक्शन है. लेट्स आस्क इट एजेंट फंक्शन क्या होता है ना. व्हाट आर एजेंट functions? Tell me based on my notes. Let's see. Okay, an agent is an entity that perceives its environment, takes actions autonomously
to achieve goals and may improve its performance through machine learning or by acquiring. ओके यहाँ पे पूरी तरह से आंसर नहीं दिखा पाया इसने, बट कुछ हद तक इसने बोला है बात. लेट्स सी किस हद तक क्लोज है इसके. Yeah, that's not very different. Describes mathematical agent function. This function it does. Okay, एक और क्वेश्चन पूछते हैं इससे. maybe let's ask कि कोई ऐसा टॉपिक जो नोट्स में नहीं है, टू सी कि ये नोट्स के बाहर तो नहीं चला जा रहा. सो टेल मी इफ देयर इज एनी mention of Bollywood in my notes. Now there shouldn't be. Let's see. Okay, that didn't work quite well. It seems like ये सेम ही आंसर बार बार दे रहा है मुझे. मे बी इसने हार्ड कोड कर रखा है, कोई मसला नहीं. अब मैं यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लूँगा, ठीक है. इसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैं वापस लवेबल के पास गया, मैंने इस स्क्रीनशॉट को पेस्ट किया, मैंने कहा इट सीम्स दैट Lovable is always responding with, no sorry, not Lovable, my bad. Seems that our app is always giving the same exact answer. Not sure we have a notes क्यों नहीं दिखा पा रहा. Okay. Exam answer. Can you make sure that there is an edge function that calls Gemini and makes the LLM call to generate the actual response displayed on the app. तो यहाँ पे edge function नाम के मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है. I'll come into that in a second. Basically edge function is something where Lovable को अगर हमें कुछ ऐसा बोलना होता है कि मतलब नॉर्मल एप्लीकेशन से थोड़ा बाहर जाके कुछ करके आओ, मसलन किसी एलएलएम से कोई क्वेश्चन पूछ के आओ या इस तरह की कोई चीज़ है, मान लीजिए इंटरनेट पर से वेदर चेक करके आओ या समथिंग लाइक दिस, तो उसके लिए नॉर्मली ये एज फंक्शन यूज़ करता है. मैं एज फंक्शन यहाँ पे लिखा, इट शुड बी एबल टू फिगर दैट आउट सेल्फ कि अगर इसको एलएलएम कॉल करना है तो वो एज फंक्शन से होगा, बट जस्ट टू मेक श्योर दैट इट अंडरस्टैंड्स दैट पार्ट मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया है. लेट्स सी किस हद तक वो इसको फिगर आउट कर पाता है. कह रहा है कि it seems like the LLM is giving some canned response regardless of the question being asked. Let's implement real Gemini integration to get proper AI responses. इसी बीच में मैं काम करता हूँ कि मैं Gemini में जाकर साइन इन करूँगा और अपना की ले आऊँगा. तो ये आप भी कर सकते हैं अपने लिए. get a Gemini की, ये रही मेरी की, मैं इसको कॉपी कर लिया. ओके, मेरे पास की आ गई है अगर ये मेरे से की मांगता है तो. ओके, एप्लीकेशन रिसेट रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. ये हमारा प्रीव्यू है. यहाँ पे मैं फिर से भी ये क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे क्वेश्चन ठीक से चलते हैं कि नहीं, राइट. बट फिलहाल लेट्स लेट लवेबल डू इट्स वर्क. ओके, कुछ थोड़ा सा इशू आया है, बिल्ड थोड़ा सा अनसक्सेसफुल आया है. कैन नॉट फाइंड जेमिनी सर्विस. डिड यू मीन जेमिनी सर्विस? इसको फिक्स करवा देते हैं, ये खुद से कर लेगा मोस्ट लाइकली. फिक्स यहाँ पे बेसिकली एरर दिखा रहा है, हमें ये सब ज़्यादा सोचना नहीं इसके बारे में. द पॉइंट इज हमने कह दिया भाई ठीक है ये एरर आ रहा है, इसको फिक्स कर लो. फिक्स करने देते हैं इसको. इसने कोई छोटी सी गलती कर दी होगी कोड लिखते वक्त.
Okay. Okay. Now let's ask it some questions. Tell me if there's negative testing करते हैं, right? Anything about Bollywood in my notes. Oh, before I do that, let's just check. Okay, हमारे notes at least अभी तक safe हैं. Okay. Um. Okay. Tell me if there's anything about Bollywood movies in my notes. Okay. That did not work. It seems like अभी भी वही आंसर दे रहा है. नोट टेकिंग एटलीस्ट हो पा रही है. लेट्स सी. ओके, ये चाहता है रिफैक्टर करना. मैं उसको रिफैक्टर करने देता हूँ. रिफैक्टर का मतलब सिंपली होता है कि कोड को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना ताकि उसको मैनेज करना ईजी हो जाए. ये खुद से सजेशन देता है. मेरे को लगता है कि ये रिफैक्टर होना चाहिए, तो मैंने उसको पहले रिफैक्टर करने दे दिया है. वंस ये रिफैक्टरिंग कंप्लीट कर ले, होपफुली विदाउट एनी बिल्ड इश्यूज, तो उसके बाद बिल्ड इशू का सिंपली मतलब होता है कि कोड में कुछ इस तरह का मसला है कि जिसकी वजह से एप्लीकेशन डिस्प्ले नहीं हो पा रही या सिंपली बन नहीं पा रही. बेसिकली कोड में एरर है. बट एज होपफुली देर विल बी नो एरर्स एंड ये दिस जस्ट वर्क्स. एंड आफ्टर दैट हम इसको थोड़ा बताएंगे कि भाई ये अभी भी क्वेश्चंस ठीक से नहीं चल रहे. लेट्स सी. ठीक है, तो फिलहाल तो ये हो गया है. ओके, फॉर सम रीज़न इस तरफ चल नहीं रहा. आई ऑल्सो रिफ्रेश दिस पेज इन अ सेकंड. ठीक है. ओके, तो ये मेरे को जेमिनी एपीआई की डालने बोल रहा है, वो मैं अभी पेस्ट करके आया था, तो मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है. आई थिंक कि अब ये काम करना चाहिए. लेट्स होप सो. So tell me if there for the last time is anything about, let's ask something different, meteors in my notes so far. That's great. Okay. Summarize all my notes and give me point by point. Give me bullet points, right? There you go. 4 ऐप्स थे, चारों के बारे में नोट्स और थोड़ी सी समरी. आ गई. हमारा नोट टेकिंग ऐप तैयार है. अमेजिंग. We did not write a single line of code. Not at all. There we go. So I will close this class at this point for this. Hopefully आपको आज की क्लास देखकर ये समझ में आ गया होगा कि मेरी तरह ही आप भी अपने लिए एप्लीकेशंस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. And hopefully you'll start experimenting today. And if you want to learn how to use such applications to make, industry ready applications where you can go and sell the application. We probably can't sell this application. There's millions of applications like this one. But when we do have the idea, the ability to bring that into life within a few minutes, just like we did in this class today, and then, put the right type of features, make it look how we want it to look, and never have to write code still. अगर ये सुपर पावर आपको चाहिए तो come join us at Seraverse Academia, inshallah.